चलें. Okay, there were some questions regarding transition element. I have given the definition to you. मैं repeat कर रहा हूँ कि transition elements are the elements which form one or more stable ion. This is very important because there are few elements which can form ions, but those ions are not stable. तो हमें देखना है कि which ions are stable ions. So which form one or more stable ion having partially filled d orbital. So you should remember this definition. Right, now we are moving towards electronic configuration of few other transition elements. For example, after scandium, if we take an example of scandium, after that we are going to titanium, which is 22. Now in case of titanium, the electronic configuration is again will become, if I write AR is argon having 18 electrons. So sometime examiner, you have a question in past paper in which argon is given and you have to write remaining configuration. Now the configuration of argon is 1s2, 2s2, 2p6 and 3p6. So there is no need to write configuration of argon. You just write configuration after argon. So after argon it will be titanium. So it should be 4s2 and 3d2. But as I said before, that once you have an electron in 3d orbital, then you must switch the orbitals because due to repulsion, energy of 4s orbital is slightly increased. So it will become 3d2 and 4s2. This is known to be a correct configuration of titanium. Now if I take another example, and another example is configuration of chromium. Now chromium is 24, and if you configure chromium, then the configuration will become 3d, 3d4 and 4s2. But when we write 3d4 and 4s2, this configuration is not considered to be correct because it is not a stable configuration. And why it is not stable? Because if you move an electron from 3d, which has slightly lower energy, from 4s, what will happen here? One electron will move from 4s to 3d. एक electron 4s से 3d में चला जाएगा. And what is the reason? Reason ये है कि 3d orbital become half filled. आपको पता है कि d orbital की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. अच्छा, 10 में से अगर इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन मींस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन any other partially filled orbital. So you have to remember that once you write electronic configuration of chromium, then you will write 3d5 4s1 not 3d4 4s2. ये भी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या होती है. इट शुड बी 3d5 एंड 4s1. And why we transfer one electron from 4s to 3d? उसका रीजन ये है कि 3d orbital become half filled, and half filled orbitals are more stable than partially filled orbital. So please you should remember कि जब आप electronic configuration लिखोगे, so never write 3d4 4s2, you will always write 3d5 and 4s1. This is known to be a correct configuration of chromium, and the explanation is that the electron will move from 4s to 3d because 3d orbital become half filled. सवाल यह है कि why an electron was moving from 4s to 3d? 4s तो पहले फिल था, 4s already have 2 electron, तो फिर क्यों हमने जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया? Again it has the same reason कि 4s orbital become half filled, and once 4s orbital become half filled तो स्टेबिलिटी आ गई. देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 पर भी वो स्टेबल है, 1 पर भी स्टेबल है.
So that means that there is no change. Either 4s orbital has 1 electron or it has 2 electron. In both the cases it is stable. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया 4s से 3d में तो 3d को फायदा हो गया. 3d orbital become more stable. That's why overall element become more stable. Hopefully ये बात समझ में आ गई होगी. And it is a common question which we have in the past paper जहां एग्जामिनर आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाता है. Now there is another example. There is another example of copper. Copper is 29. Now if we configure copper, copper is again argon, and if you write configuration of copper, it will become 3d9 and 4s2 because the proton number is 29. लेकिन जब आप इसकी configuration लिखोगे, so never write 3d9 and 4s2. You will always write 3d10 and 4s1. This is known to be a correct configuration of copper. And why we took 3d10 and 4s1? Again, answer is very simple, because after giving one electron from s to d, d orbital become completely filled. And once d orbital become completely filled, इसका मतलब ये हुआ कि d orbital become stable. देखो दो conditions होती हैं which are more stable. Consider two others. One is half filled, other is completely filled. So if the orbital is completely filled or if the orbital is half filled, in both of the cases stability ज़्यादा होती है. So in case of chromium and in case of copper, there are two exceptions जहाँ पर आपको electron transfer कर रहा है, but in other case you will not. For example, अगर आपको मैं कॉन्फ़िगरेट करवाता हूं जैसे आयरन इज 26. सो इफ यू कॉन्फ़िगरेट आयरन देन यू विल राइट 3d6 and 4s2. देयर इज नो नीड टू शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s to d. रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर चले हमने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर भी दिया तो d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा. सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू गेट स्टेबिलिटी. Hopefully बात समझ में आ गई होगी. Right? Again, if you have any question, please WhatsApp me. I will give you answer. Next जो है, अब एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है कि लाइक निकल 28 कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 and 4s2. अब स्टूडेंट ये कहता है कि जनाब मैंने दो इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दिए और 4s नॉट हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल. It is not possible to give two electron from 4s to 3d. ये कैसे हो सकता है? देखो एक रोटी तो वो शेयर कर सकता है, लेकिन अपने आप को भूखा छोड़कर वो दूसरे दोनों रोटी इसको दे दे, it is not possible. So that's why transfer of two electron from 4s is not possible. Yes, one electron is possible because after transferring one electron, उसकी stability पे फर्क नहीं पड़ रहा. It is still stable because it become half filled. तो 4s के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पॉसिबल है बट नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इज 3d8 and 4s2. होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी. राइट? ओके, अब हम इस बात की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं क्वेश्चन देख लूं. ओके, सो नो क्वेश्चन. क्या ये बात जो है वो पॉसिबल है कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आयंस की करने को कहा जाए, देन व्हाट विल बी द पैटर्न टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद सपोज आई एम टेलिंग यू iron 2 positive 26. Now iron 2 positive is an ion. Now we have to configure iron 2 positive. Once we configure iron 2 positive is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and again you should remember it will be 3d6 and 4s2. ये मैंने अभी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है. इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग आयरन 2 पॉजिटिव. राइट? आयरन 2 पॉजिटिव अभी हम नहीं कर रहे. ओनली अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर 26 प्रोटॉन्स. नाउ वंस वी से आयरन 2 पॉजिटिव,
तो आयरन 2 पॉजिटिव का मतलब यह है कि वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ यू रिमेंबर्ड that the removal of electron and addition of electron always occur from valence shell, from outermost orbit. And now in case of transition element, in case of d block elements, the outer shell is 4s. So the electron must remove from 4s before 3d, because 4s orbital is outer orbital. 4s orbital has slightly higher energy than 3d. That's why electron removal first will occur from 4s. So now the correct configuration will be, after the removal of 2 electron from 4s, it will become 4s naught. So now one more thing you should remember, that whenever you write electronic configuration of any transition metal ion, first you will write normal configuration, ताकि आप गलती ना करें. First you will write normal configuration, and then whatever the charge is given to you, you have to remove those number of electron first from 4s and next from 3d if it is required. अगर जरूरत है तो. कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? This is another example. Suppose I am taking Fe3 positive. Now we need to remove 2 electron. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करने की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अब आप पहले तो 4s से निकाल देंगे, बट इन केस ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव वी नीड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन. तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब यह है कि नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 3s2 3p6 3d5 एंड 4s नॉट. 4s एम्प्टी हो गया. अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इज इट नेसेसरी टू राइट 4s नॉट? तो मेरा आंसर है नो. अगर आप नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स सिंपली रिप्रेजेंटिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स वाज रिमूव फ्रॉम 4s, इसलिए हम 4s नॉट लिख रहे हैं. नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम 4s, 1 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम 3d. एज अ रिजल्ट इट विल बिकम Fe3 पॉजिटिव. होपफुली बात क्लियर हो गई होगी. Right? Now we are taking another example. Another ion is copper ion, which is 29. अब नॉर्मली स्टूडेंट जब कॉपर पॉजिटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो अगेन एक और मिस्टेक करते हैं, और वो ये करते हैं कि 3s2 3p6 देन 3d9 4s2, वो कॉन्फ़िगरेशन ये लिख देते हैं. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू नो कि कॉपर की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नॉट 3d9 4s2, it is 3d10 4s1, which is considered to be a stable configuration. अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? we have to remove 1 electron. तो 1 electron कहां से निकलेगा? not from inner orbital, it is always from outer orbital, and outer orbital is 4s. तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, इट इज नॉट 3d9 4s2, अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 3d10 4s नॉट होगी. सो द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर पॉजिटिव आयन, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 3d10 4s नॉट होगी, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल. होपफुली आपको आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई होगी. देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि आप जो है वो ट्राई कीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो. यू विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव. इसके अलावा जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की. इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कीजिएगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव. इसके अलावा आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा निकल 3 पॉजिटिव. सो दीज आर द फ्यू आयंस जो कि आप इनको ट्राई करेंगे. इनके प्रोटॉन नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली डेवलप एन आइडिया कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है. होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी. कितनी देर की हो गई? हो गई ना? ठीक है. सो फिर नेक्स्ट सेशन. बस 2-3 मिनट का ही देंगे पॉज.